Good evening, everyone. Warm welcome to everybody. So, this is the post market analysis video where I will share the market outlook for 25th January 2022. So, as I have been on a break from the YouTube, I am back now and I was busy in some of the personal studies regarding the markets and I have been doing wonderful. So, लास्ट फ्यू डेज से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आई एम शेयरिंग विद यू द डेटा एंड द डेटा हैज बीन कंटिन्यूअसली बियरिश एंड नाउ इट्स लुकिंग लाइक अ बियर मार्केट. तो कुछ एडवाइस मैं आपको दूंगा आज इस वीडियो में एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स मैं शेयर करूंगा जिससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे. सो लॉट ऑफ पीपल हैव अटेंडेड माय वेबिनार येस्टरडे एंड काफी सारे लोग हैं जो मिस आउट कर दिए थे क्योंकि उन्हें कहीं जाना था एंड वट एवर द रीजंस वर. So I have given them the opportunity to buy the recorded session. ठीक है. तो if you want to buy the recorded session, you can just DM me on my Telegram channel @prolific_traders. तो उस पे आप मुझे DM करो, मैसेज करो, and I will let you know how you can buy the recorded session. Also, if you buy the recorded session, I will add you on the webinar group. तो वहां पे मैं कुछ अपडेट शेयर कर देता हूँ regarding the setups I have shared. अब yesterday only in my webinar I have shared a few setups और जो भी मैंने सेटअप शेयर किए थे आज मार्केट में वो मिल भी गए. ठीक है. तो it was a wonderful session and because of that I hope that a lot of people might have benefited. Let me first read out the data for you. So FIs have reduced their net positions in stock futures, index futures. They have increased their net positions in index calls and index puts. Okay, so they have made some increment in the amount of index calls and index puts, but they are net sellers in stock futures and index futures today. Also, they are net sellers in cash and they continue to sell the equities heavily. DIs have bought around 74 crores worth of shares, which is quite negligible. However, there is some improvement between index calls and index puts ratio, but the FIs increasing net shorts in index futures is a very bearish signal for the markets. So that is another very bearish signal that the FIs are increasing their net shorts on the index. Clients continue to increase longs in index futures and also heavy amount of index calls added by the clients hints towards a bearish scenario. So just some of the retailers like you and me, they have bought index calls today heavily. They have sold index puts heavily today, and also they have increased their net positions in index futures. So retailers are looking quite bullish. Pros heavily short on index calls today and also added some number of index puts. So pros are bearish, FIs are bearish, clients are bullish. That clearly gives us the conclusion that the data is very bearish today. And global markets have been going down and down and down. And today also Nasdaq is 2% down and Dow Jones Industrial Average is 1.3% down. DXY is also increasing. So major outflows from the emerging markets all over the world. Few days ago मैंने आपको एक update दिया था and it was a hint, it was a kind of hint regarding the IT stocks. मैंने आपको IT stocks के regarding एक hint दी थी. And if you have followed that hint, तो आपके if you were long on the IT stocks, थोड़ा सा आपने अपने पैसे बचा लिए होंगे, or maybe if you have created some fresh shorts, तो you might have made some money. A lot of people were asking me that whether they should buy TCS or not, and I have told them that they should not buy TCS for the moment because the technology and the IT space all over the world is not looking good. और मैंने आपको ये मैसेज दिया था फ्यू डेज अगो 20th जनवरी को ही मैंने आपको ये मैसेज दे दिया था कि Nasdaq डेली चार्ट्स वेरी क्रूशियल सपोर्ट ऑफ 200 EMA. जनरली Nasdaq कभी 200 EMA तोड़ता नहीं है, बट क्लोजिंग बिलो 15,000 कैन बी नेगेटिव फॉर टेक्नोलॉजी एंड द IT स्पेस ऑल ओवर द वर्ल्ड. And since the last 3-4 days, you have been seeing that Nifty IT में क्या चल रहा है. So this was another observation. Keep this in mind. It will help you in next bear market or major falling markets. Okay. तो इस टाइप से Nifty IT में correction आ रही है. You can see it was at 38,990 last week and आज 34,000 की range में आ चुका है Nifty IT. So extreme selling in the IT space today also 3.4% down.
and the markets have been wonderful for me from the last 3-4 days because I've been continuously short on the index और मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ काफी सारी मैंने swing trades भी ली swing shorts भी ली बैंक निफ्टी में and I have shared with you my performance मैंने जो भी trade किया है I have shared with you today also it was a wonderful day for me lot of people who have followed me today they have made big money today and कुछ trades जो मैंने आपके साथ share की थी let me show you Bank Nifty 37,000 P today. We took a swing trade. Swing trade ली 740, 750 पे and today easily achieved target आज ही achieve होगा intraday में. So that was a 350 plus point intraday trade. इसके अलावा 100 more points हमने बनाए 900 920 पे एक और बार बाय किया था 30-40 पॉइंट एसएल के साथ और वहां से अगेन 1010 1020 आ गया था इन 6 मिनट्स तो इन 6 मिनट्स की स्कैल्प में फिर से 100 पॉइंट बनाए थे एंड नॉट ओनली दिस इसके अलावा 40-50 पॉइंट्स की भी बहुत सारी हमने स्कैल्प्स ली थी तो इट वाज अ वंडरफुल डे ओवर यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग लाइक 600 to 700 पॉइंट्स वी हैव मेड ऑन बैंक निफ्टी और एक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन मैं करना चाहता था टुडे एंड दैट इज बिकॉज कि व्हाट हैपेंस कि बहुत सारे लोगों ने क्या है बुल मार्केट में एंट्री ली है एंड नाउ दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज इस टाइप के मार्केट को वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं लाइक हाउ टू हैंडल सच मार्केट्स व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ पोजीशंस इन इक्विटी ऐसा नहीं है कि नोबडी is having any position in equity even I am having a lot of position and exposure in equity but how to control your portfolio from bleeding because actually you can't control your portfolio from bleeding in such markets but what is something that you can do to save yourself from this kind of market okay तो यहाँ पे on January 21st this is a screenshot I have told to my premium group members that you can hedge your portfolio by 17,500 puts of February okay and you can clearly see that this put was bought at 325 today it was at around 700 levels so more than a double so this is something that you have to do when you are having a lot of exposure in equity because I don't think कि ऐसा हो सकता है कि everybody can sell at the top और सारी equity positions एकदम top पे market के खत्म कर दे and then उसके बाद जब market एक bottom बनाए तो एकदम bottom पे जाके सारी equity positions वापस ले ले this is something that can't be done by uh, anyone तो I think कि there should be some another thing that you should learn कि जब भी ऐसा आपको लगे और market पे you have a doubt like daily I am sending you the data so it was already very much clear कि some big fall has to happen in the markets and उसके बाद you have to hedge your portfolio so just going to read something for you please listen to me carefully okay yeah just going to read something for you please listen to me carefully and please note it down somewhere so the next time you know that markets are going to fall and you are having a lot of positions in equity so how you can manage them okay so please read with me carefully. Hedging your portfolio means you are buying a cover against your investments in the market. Let us suppose you have made investments worth 10 lakh rupees in the market in some stocks when the market was at 18,000 levels. Okay. Now, if the market comes down to 17,000 levels, your net portfolio value will go down in this fall. Okay. This value depreciation can be different for everyone depending upon the exposure in the markets. A portfolio hedge is taken to cover or at least make some part of the losses you are doing in your portfolio. This will give you some money for your time. Or also when the market goes up, you will make money on equity as well. तो जब तक आपका पोर्टफोलियो गिर रहा है ट्राई टू कवर दैट लॉस और ट्राई टू कवर दैट टाइम लॉस जो भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उस लॉस के दौरान मतलब कि लेट अस सपोज कि मार्केट्स 2-3 महीना डाउन ट्रेंड में रहते हैं तो यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम and that is because of systematic risk of the markets okay so now let us read the second message taking my example let us suppose I made exposure in equity worth rupees 5 lakhs in the last week considering my swing positional and investment trade ideas okay all my trades and investment made on the long side have systematic risk of the markets undiversifiable risk okay something that can't be diversified because if everything is falling
then it's sure कि आप कितना भी fundamentally अच्छा stock ले लो, it will fall only. I know even after good analysis, markets can prove me wrong just by falling in good numbers. तो जैसा कि आज हुआ 500 points on Nifty and उसके बाद you have seen कि advance decline ही इतना ज़्यादा poor था कि कोई भी stock ऊपर नहीं था आज. I balance this risk by taking a short in the markets to balance some of the losses and later on cover them when my equity goes up. Basically, hedge protects your time and gives you the ability to survive in the markets. तो जो लोग markets में रहना चाहते हैं for a long time, they should learn this thing because if you have been someone जो bull markets में market में entry ली थी, तो this type of market is hard for you. So please read the messages carefully in order to understand. This is something no other person will tell you. So this was something I told my premium members. This is an investment made to protect my investment. Okay. So I've done this investment in 17,500 puts, and that was done to basically counter all the losses made in the portfolio. And today it was a wonderful day. Just shared something with my members that bear market learning code. Okay, so just going to read this as well. Bull markets are slow, bear markets are fast. So you can see कि जब market ऊपर जाता है तो how slow it is and कितना धीरे धीरे ये करके time लगा के 2-3 week लगाता है ऊपर जाने में and in just 5 days वो सारा नीचे आ जाता है. So this is a basic psychology कि जब भी bull market होगा तो it will move slow, it will move daily up, but again it will be a slow move, and bear markets will always be fast. Okay. One more thing that I have shared with my members is consider this as a kind of motivation that bear markets are always short-lived. Okay. So this is some knowledge that I wanted to share because I know a lot of people have entered the markets after coronavirus, and that is why they have less knowledge regarding the bear markets. If you want to see what happened during the coronavirus, I will show you. Okay, I will show you how markets went down during that time. So just see this. Okay, just see this. Key market was at around 12,000 or something in February, and on this after 30 days, they were at around 7,000. So 5,000 points fall in 30 days, and this is how bear markets work. Okay, they work very fast. और it happens like कि जितने में कोई ट्रेडर रिएक्ट करना स्टार्ट करता है उतने में मार्केट अपना एक्शन खत्म कर देता है. तो फॉर ट्रेडिंग इन सच मार्केट्स योर एक्शन मस्ट बी वेरी क्विक, योर रिएक्शन टू द मार्केट्स एक्शन मस्ट बी वेरी क्विक. ठीक है. तो जब भी मैंने लास्ट 2-3 डेज में शॉर्ट्स लिए ईदर इन बैंक निफ्टी और इन निफ्टी, और जो भी मैं स्विंग ट्रेड्स ले रहा हूँ शॉर्ट साइड पे, माय रिएक्शन हैज बीन क्वाइट फास्ट टू द मार्केट. जब ये फर्स्ट फ्यू कैंडल्स बनना चालू हुई थी, सेलिंग चालू हुई थी, I was short on the markets at the top only, and that is why I have made a big reward in whole of this downside rally. Okay, so this is something that you need to learn कि जब भी bear market होगा, it will be fast and your reaction must be very quick to the market action. ठीक है. Now one more thing जो मैं आपके साथ discuss करना चाहता था. This is something that I told in the webinar yesterday, and I think that this is something that everyone must know कि जब भी आप इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो ना, you will get momentum as soon as the range of last day is taken out. ठीक है. What I mean by this is कि जब भी जैसे ही you will break either the high of previous day or low of the previous day, you will get momentum in the market, and that is what is the basic index trading strategies. ठीक है. ये सबसे बेसिक इंडेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है कि आपको जैसे ही प्रीवियस डे की रेंज ब्रेक हो रही है वहां पे उस मोमेंटम की तरफ राइड करना है मार्केट में, एंड दैट इज हाउ यू मेक मनी ऑन द इंडेक्स. दैट इज व्हाट इज फॉलोइंग द ट्रेंड. मतलब यू वांट टू नो ना कि व्हाट इज फॉलोइंग द ट्रेंड, मतलब ट्रेंड को कैसे फॉलो करें. तो दिस इज हाउ यू फॉलो द ट्रेंड कि जैसे ही लास्ट डे की रेंज ब्रेक होती है, you have to put your money on that side and you have to make your money on that side. So this is how we follow the trend. अब सिंपली वी ब्रेक लास्ट डे लो, मतलब जो फ्राइडे को लो बना था, वी ब्रोक दैट लो एंड वी गेव अ बिग फॉल, अ वेरी बिग फॉल इन द मार्केट्स हैपेंड आफ्टर दैट. एंड इफ यू सी, जस्ट लेट मी मूव ऑन टू द 15 मिनट चार्ट्स. तो यहाँ पे ये लो टूटा था
दिस वाज द पॉइंट, आई हैव मेड द लो ऑन 1 डे टाइम फ्रेम पे मैंने आपके लिए मार्क कर दिए, एंड दिस इज द प्लेस वेयर ये लो टूटा था क्लियरली इफ यू सी। तो 9 ईएमए से मैं आपको बताता हूँ, आपकी कोई भी ट्रेड आप ट्रेल कर सकते हो 15 मिनट्स पे, एंड यू कैन सी यू कुड हैव ट्रेल्ड होल ऑफ दिस डाउनसाइड रैली। ये जो पूरी डाउनसाइड रैली थी आज मार्केट्स में, यू कुड हैव ट्रेल्ड दिस विद द हेल्प ऑफ 9 ईएमए विद माय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी। So that it was quite simple, and this was also taught how to perfectly use the EMAs in my webinar. Okay, so let me know if anybody wants the recording of that session. Okay. One more thing, lot of people are asking ki how I have made swing trades, swing short trades in Bank Nifty or Nifty. How my view was short, मतलब how मेरे को पता कैसे चला कि मार्केट गिरने वाला है, तो एक थोड़ी सी इंडिकेशन आपको बता देता हूँ। नॉट ओनली टुडे, मतलब ऐसा नहीं कि ये आपको सिर्फ आज हेल्प करेगी ये ट्रेड। ये लॉजिक जो मैं आपको बताने जाने वाला हूँ, अभी जा रहा हूँ, मतलब इस ट्रेड का जो लॉजिक जो मैंने ट्रेड ली है, this will help you in trading EMAs, because EMAs I have already told you are not going to help only in trailing your profits but riding the trend and knowing the trend as well कि trend किस side पे, ठीक है। तो just going to apply EMAs और एक के बाद एक देखना how markets have worked on the basis of that, ठीक है। तो यहाँ पे we have seen breakdown of 9 EMA, यहाँ पे एक bearish engulfing बन रहा है प्राइस एक्शन पे, उसके बाद उसका एक फॉलो अप आ रहा है। एज सून एज वी ब्रेक द लो ऑफ बियरिश एंगल्फिंग कैंडल एंड क्लोज बिलो इट, वी स्टार्ट टू एक्ट ऑन दैट बियरिश एंगल्फिंग। तो कभी भी बियरिश एंगल्फिंग नेवर वर्क्स इन अ सिंगल कैंडल, उसके अगली कैंडल को देखना भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे ही वी हैव ब्रोकन 9 EMA, वी हैव वेंट टिल 20 EMA, 20 EMA टच किया। जैसे ही वी हैव ब्रोकन 20 EMA, वी हैव वेंट टिल 50 EMA, ओके। And जैसे ही we have broken 50 EMA, let me apply 100 EMA for you all. We have gone till 100 EMA, okay. और जैसे ही we have broken 100 EMA today, we have gone till 150 EMA. और this was the low of the markets today. आज markets ने support लिया 150 EMA, and जैसे ही we will break 150 EMA, this is what can happen. So just a hint for you, and let us see if this happens. Let me know if you can make profit on the idea. So just a kind of a hint that I'm sharing in advance with you all. So let me now talk about how markets can go tomorrow. First, let me again see the global markets. Global markets are going down, and SGX Nifty is now in 16,000 figures. Okay, just that it is trading below 17,000 and round numbers. Now it is trading on 16,880. Okay, so global markets are quite negative and indicating a big gap down in markets tomorrow. तो आज मैंने आपको लास्ट में मैसेज भी किया था, प्लीज डोंट गैम्बल। मैंने वेबिनार वाले ग्रुप वालों को भी बताया था दैट प्लीज डोंट गैम्बल, देयर इज नो पॉइंट इन कैरिंग एनी लॉन्ग्स। कोई पॉइंट नहीं बनता है लॉन्ग्स को कैरी करने में। लास्ट में अगर आप ये 5-6 मिनट में इफ यू आर सीइंग सच काइंड ऑफ अ मूवमेंट एंड यू आर बिकमिंग ग्रीडी, इफ यू आर गेटिंग ग्रीडी कि यहाँ पे मुझे एक लॉन्ग कर लेना चाहिए, ये डबल बॉटम बन रहा है एंड दिस इज समथिंग यू कांट डू। अगर आपको ऐसी ट्रेड परफॉर्म करनी है, डोंट टेक लॉन्ग्स, इंस्टेड इस एरिया को ब्रेक होने दो एंड देन ट्राई टू टेक लॉन्ग्स, दैट विल बी बेटर। बिकॉज अब अगर कल मार्केट एट अराउंड 16,900 खुल जाता है एज इंडिकेटेड बाय एसजीएक्स, तो मार्केट विल ओपन अराउंड हियर। So anybody who has taken long here, it will be a total mess for him or her. Okay, so this is something a mistake you make कि एक ट्रेंडिंग मार्केट में आप ऑपोजिट डायरेक्शन की ट्रेड कैरी कर लेते हो। दिस इज अ वेरी बैड आइडिया, ओके। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। व्हेनेवर मार्केट्स आर इन अ ट्रेंड, वेदर इट इज अ डाउन ट्रेंड और एक अप ट्रेंड, मैंने आपको हमेशा कहा है कि फॉलो द ट्रेंड। और मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में, देयर इज नो पॉइंट इन कैरिंग लॉन्ग्स, डोंट ट्रेड ऑन योर होप्स, ओके। होप पे कभी ट्रेड नहीं करनी चाहिए कि ऐसा हो सकता है कि आज मार्केट अच्छा, आज ग्लोबल मार्केट्स अच्छे बंद हो जाए एंड टुमारो वी गेट टू सी a good green market. So ऐसा something, this is something that has a very less probability of happening, okay.
Now, just going to give you the market outlook for tomorrow. And I've mentioned that this is going to be an important video. Important video इसीलिए है because multiple things मुझे share करनी थी, like portfolio hedge and कुछ things bear market के बारे में, कुछ hints कल के market के लिए, and also ये 50 EMA, 100 EMA, 150 EMA, 200 EMA वाले कुछ secrets जो आपको पता नहीं है. I just wanted to share these. So that is why I told you that this is going to be one important video. एंड आज मैंने आपको एक मैसेज किया था दैट देयर इज नो पॉइंट इन बाइंग द डिप बिकॉज समटाइम्स इट कीप्स डिपिंग. तो होप एवरीवन गॉट द हिंट कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. एंड वो हिंट मैंने आपको इसीलिए दिया था बिकॉज सी कि ये मार्केट क्या है 100 EMA ब्रेक कर चुका था इंट्राडे पे. लेट मी अप्लाई यहाँ पे 100 EMA एट अराउंड 360. ठीक है, 360 के पास ये 100 EMA है. यहाँ पे मैंने एक लाइन मार्क कर दी है और मार्केट वाज सस्टेनिंग बिलो दैट. ओके, मार्केट इसके बिलो सस्टेन कर रहा था और एक फुल कैंडल से ब्रेकडाउन भी दिया था इस लेवल का. तो आई जस्ट टोल्ड यू कि देयर इज नो पॉइंट इन बाइंग द डिप्स. द रीजन इज कि मार्केट ने 100 EMA का भी ब्रेकडाउन दिया. तो इफ मार्केट इज ब्रेकिंग 100 EMA, इट वाज अ वेरी श्योर थिंग दैट मार्केट्स विल गो टू 150 EMA. तो just with that note, it was a clear short on the market, and that is why I gave you the hint कि there is no point in buying the dips today because it will keep dipping. And now you can see where the 200 EMA is and you can plan your trades for tomorrow. एक easy सी मैंने आपको hint दे दी है and this will be easier for you. आप next 2 days के लिए अपनी trade plan कर सकते हो. If not for मतलब कि सिर्फ कल के लिए नहीं, but for the next 2 days ये आपके लिए बहुत सी easy सी hint है कि how markets can go. ठीक है. Now, as per the expectations of SGX Nifty, SGX Nifty जहाँ पे चल रही है उसकी, if we are expecting a gap down opening below today's day. मतलब today market was down 468 points, 2.66%, and even after such a big fall, market will open gap down tomorrow. मतलब market will open below today's day low. So something that I can suggest to you is if market makes the first candle low break हो जाता है, मतलब वैसे तो there is a very less need of that also because I have already shared with you the data. Let me once again share with you that the data is very bearish. So if market is opening below today's day low, definitely you will get to see a new day low tomorrow, and वो low एक काफी अच्छा लो होगा. Means you can even go till 200 EMA on the market. So 200 EMA is coming at around 16,587. Quite interesting will be to see whether market touches this level or not because इतनी बड़ी fall already हो चुकी है and many of you will be in a disbelief कि ऐसा कैसे हो सकता है कि how we are coming at around 16,500 on the index very soon. तो quite something that people can't believe. And अगर ऐसा होता है that we are breaking today's day low, so there is a good probability that tomorrow again you will see a big bloodbath in the market. So please plan your trades according to that. Let me just open the charts of Banknifty for you. Banknifty has been quite stronger than Nifty, and not only Nifty but all the other sectors in the market. मतलब Nifty IT has been very weak, Nifty Reality has been very weak, and a lot of the other sectors are very weak. But only Banknifty एक ऐसा sector रहा है जिसमें कम fall आई है. Still, the fall is quite good to make money, but lesser than the other sectors. तो थोड़ा सा strong sector रहा है. Another observation एक Banknifty पे भी share कर देता हूँ. Banknifty has tested 100 EMA today, I think. Yes. So Banknifty has just closed a few points below 100 EMA. 36,990 पे है 100 EMA, and we have closed a few points below that level. So quite easy to expect 150 EMA once again tomorrow. मतलब आज का day low, it is at 150 EMA. तो 150 EMA पे बैंक निफ्टी है एंड ऑल्सो 150 EMA पे निफ्टी है. तो क्वाइट एक्सपेक्टेड कि वी आज कल 150 EMA तो टच होगी बैंक निफ्टी इवन इफ इट ओपन्स फ्लैटिश, बट लेस चांसेस ऑफ अ फ्लैटिश ओपनिंग बिकॉज ऑलरेडी वी आर ट्रेडिंग क्वाइट नेगेटिव. तो
Just because of that, we can expect ki tomorrow we can open below 150 EMA, and let me see where the 200 EMA on Bank Nifty is coming. 200 EMA on Bank Nifty is at around, let me see, 35,780. So yes, if we break today's day low, if we are breaking today's day low on Bank Nifty, which happens to be around 36,375, definitely you can see another 400, 500 points easy fall. So that is about Bank Nifty, and मैंने आपको दोनों का सिनेरियो बता दिया, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. क्वाइट इजी ट्रेड्स आपको मिल सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी पे. जस्ट यू हैव टू ऑब्जर्व कि आज के डे लो के नीचे मार्केट सस्टेन हो रहा है क्या. एंड यस, आई टोल्ड यू कि मैं आपको बताऊंगा मैंने वेबिनार में क्या चीज डिस्कस की थी. तो आई जस्ट डिस्कस कि कभी भी प्रीवियस डे रेंज टूटती है तो यू गेट टू सी मोमेंटम. एंड सिंपल थिंग निफ्टी में हो रही है. जैसे ही प्रीवियस डे लो टूटता है एक न्यू लो आता है और काफी ज्यादा गिरता है मार्केट. जैसे ही प्रीवियस डे लो टूटता है फिर एक बड़ी फॉल होती है, फिर टूटता है, फिर बड़ी फॉल, एंड फिर टूटता है, फिर बड़ी फॉल. सो इट्स क्वाइट इजी टू ट्रेड इन करंट मार्केट सिनेरियो. जैसे ही प्रीवियस डे लो टूट रहा है, वी आर सस्टेनिंग बिलो दैट, you just have to go short on the markets and make money. So this is a very simple rule to follow in the markets right now, and you know that I've already explained you that it is a bear market. It will work fast. Okay, it's not like a bull market, and it will work quite fast. Another thing to note about bear market is bear markets are very short lived. और ये ऐसा नहीं है कि bear markets could go on for a very long time. You will see a good, very good bull market after every bear market. So please don't lose the opportunity. जब बहुत अच्छी डिप आपको मार्केट में मिले, स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग गुड स्टॉक्स. दैट इज माय एडवाइस. ये मैंने आपको 16400 पे भी कहा था. उसके बाद भी वेंट 1900 पॉइंट्स लॉन्ग ऑन द इंडेक्स. आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली स्विंग ट्रेड्स में, पोजिशनल ट्रेड्स में, इन्वेस्टमेंट्स में. And now once again we are giving a good dip. तो जैसे ही we complete a good dip on the markets, you can again look for investments, positional opportunities, and swing trades, because after every big bear market you will see a very, very big bull market. That is what I will say to follow you. Okay, so this was about market outlook video for today, and I hope that you will learn a lot of things from this video. So if you are not on our Telegram channel, you can join our free Telegram channel from the link below. And please let me know how was the analysis, और जो मैंने आपको swing short की analysis बताई, how was this analysis, and whether you will be looking to use such kind of EMA and price action combination in your trading from tomorrow. So thank you guys. Have a nice day.